Hello everyone and welcome to the online session. So today we'll cover topic from chapter 2. Our chapter 2 is nutrition in animals. So today we are going to discuss about nutrition process in amoeba. As in our previous classes we have discussed about digestion process in human being, then we have discussed about digestion process in ruminants. Today we'll discuss about nutrition process in amoeba. So here we go. Yes, so as in the slide you can see, with the help of pseudopodia, this unicellular organism can not only change its size and shape but also capture its food. So here we are talking about amoeba, and here you can see the word pseudopodia. So we'll discuss about it. In the picture you can see picture of nutrition in amoeba. So in the picture you can see the pseudopods, nucleus, cell membrane, cytoplasm, food vacuole, or you can say digest food, contractile vacuoles which excretes water and waste, and you can see food being engulfed by pseudopods. So we'll discuss about it in the next slide. Carefully see parts as you can see in the picture. So here you can see the steps as in human being or in ruminants when we have discussed about. So we have seen some steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion, as you can see in the picture. So in first picture you can see nucleus and food particle, right? In second you can see the pseudopodia which engulfs the food particle in amoeba. Then third, food vacuole you can see. In next step you can see the process digestion of food particle, then you can see absorption, assimilation and egestion, right? So in the step you can see the complete process. In our next slide we'll discuss about different process. Again you can see food particle through pseudopodia, amoeba engulfs it food particle, then digest it, absorb it, assimilate it, and then waste materials, egestion of waste material you can say. So this is about nutrition process happens in amoeba. Our next slide is about amoeba, the single celled wonder. So here we'll discuss about some important facts about amoeba. As you can see, if you have a book, you have seen amoeba is a single celled microscopic organism. बिना microscope के we cannot see it. It is single celled microscopic organism. It has no fixed shape. इसका कोई fixed shape नहीं होता, and it has finger like projection called pseudopodia as you have seen in the picture, right? And amoeba engulfs its food with the help of pseudopodia, and they stretch around the food and fuse with each other. This form of vacuole, आपने अभी अभी पिक्चर में देखा कि जब pseudopodia फूड पार्टिकल को आप कह सकते हो ट्रैक करता है या कैच करता है, देन एक वैक्यूल क्रिएट होता है दैट वी कॉल फूड वैक्यूल. देन द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड वैक्यूल एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस. फिर ये जब सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इसका, एसिमिलेशन होता है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से इसके एक्सपेल्ड हो जाता है थ्रू द सेल membrane. So here you can see the points. Amoeba is a microscopic unicellular organism. It mostly resides in places like pond water. Its structure consists of the following basic component: a cell membrane, a nucleus, cytoplasm, you can see endoplasm and ectoplasm, and small food vacuoles,
these look like small bubbles, and finger like projection called pseudopodia, also known as false feet. So this is about amoeba. See the slide carefully. These are very important points about amoeba. So our next slide is about, again you can see the picture. First amoeba senses the food, then सबसे पहले अमीबा ये सेंस करता है कि फूड जो पार्टिकल है उसके नियर बाई है, देन उसका जो स्यूडोपोडिया पार्ट होता है वो सराउंड कर लेता है फूड को. द फूड इज इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल. सराउंड करने के बाद उसको इनक्लोज कर लेता है थ्रू फूड वैक्यूल. देन एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. जैसे कि जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, सो उसमें हमने देखा था कि कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो फूड पार्टिकल को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, राइट. ऐसे ही इससे साइटोप्लाज्म से जूस सीक्रेट होता है जो कि फूड वैक्यूल में जाता है और ये हेल्प करता है उसको ब्रेक डाउन करने में. एज स्टेप 5 यू कैन सी फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड. उसके बाद उसको यूज कर लिया जाता है इसकी बॉडी के थ्रू, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है विच हैज एक्सपेल्ड. सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन प्रोसेस इन amoeba. I hope you all have understood about it. And in our previous slides we discussed about human digestive system, right? So as we are discussing about it again because we have completed the chapter. So human digestive system we have discussed about. Here you can see the picture. आपने steps में discuss किया था हमने इसके बारे में, जिसमें कि हमने different steps discuss किए थे, and the steps were ingestion मतलब intaking of food, digestion फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होना, एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उससे उनका एब्जॉर्ब होना, एसिमिलेशन आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक इनका पहुंचना और यूटिलाइजेशन होना उनका, देन इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसका बॉडी से एक्सक्रीट होना. सो दिस इज अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स में जो डिफरेंट चीज हमने देखी दैट इज इनका स्टमक डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में. रूमिनेंट स्टमक हैज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स: rumen, reticulum, omasum and abomasum. So this is about chapter 2 nutrition in animal. I am giving you worksheet also. See the slides carefully and complete your worksheet. Till then, thank you. Stay home, stay safe.